Hello students, in this video I have to discuss about the poem, and the poem name is The Mountain and the Squirrel. So what they are talking about, these two things, so you can see in the picture also that one is looking big, another is looking small. तो एक आपका बहुत ही साइज में बड़ा है आपका, और दूसरा स्क्वायरल है आपका विच इज़ लिविंग थिंग, एंड माउंटेन इज़ नॉन लिविंग थिंग. तो वन हैज़ अ लाइफ, अनदर हैज़ no life. So this is the one difference which we can see, but main thing that which is to be understood, जिसको हमें समझना है आपका, that whatever the things which are made by the God, so they have purpose. तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई आपका पर्पस है आपका, for that purpose it is made. We cannot say anybody that has no value, whether person is poor or rich. If I talk about the poor or the rich person, the things which poor person can do, that cannot be done by the rich person, है ना. तो आप देखें that if you see a worker, so worker can lift any load which is very heavy, but it cannot be possible for a rich person or who is living a good luxurious life, है ना. तो कहीं ना कहीं वो काम उस काम को नहीं कर सकता. लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिल्डिंग. So you see mason and the workers, so they can make building, ठीक है, in a very easy way, which is not possible for a rich person. अगर आप rich person से कहेंगे that you have to just make this building, so it is not easy for you, ठीक है, it is not easy for him. So it means that he can spend money, तो वो सिर्फ मनी को स्पेंड कर सकता है आपका, but he cannot make the building or anything that is to be made by the mason. तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि दैट इट डजेंट मैटर दैट पर्सन इज स्मॉल और, ठीक है, दैट हाई इन वैल्यू. तो कोई भी चीज़, वेदर इट इज़ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी चीज़ हो सकती है आपका. सो एवरी थिंग इज़ यूनिक, ठीक है, इन देयर ओन वे. तो हर एक चीज़ आपका यूनिक है अपने ही तरीके से आपका. सो विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो जिसको हमें समझना है आपका. सो वी कैन नॉट से दिस थिंग के दैट पर्सन, ठीक है, इज़ वर्थलेस, ठीक है, तो वो बेकार इंसान है आपका. सो वी कैन नॉट से दिस थिंग, सो दैट एवरी थिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू, वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ यू हैव टू कम टू दिस पोएम which we have to understand. So there is a kind of debate or the arguments, ठीक है, which is between these two things. माउंटेन में और स्क्वायरल में आपका एक है ना आर्गूमेंट्स चल रहा है आपका. सो यू कैन सी दैट व्हाट इज, ठीक है, हैपनिंग इन दिस. नाउ लुक इनटू दिस. द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ quarrel. Okay, so you can see that these two creatures had a quarrel. So quarrel means fight. So they are fighting each other, तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं आपका. एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग. सो फॉर्मर मीन्स द माउंटेन्स. फॉर्मर कहते हैं इफ समथिंग विच कम्स फर्स्ट, तो जो भी चीज़ पहले यूज़ करी जाती है आपका, सो दैट इज़ फॉर्मर. इफ समथिंग कम्स इन द लास्ट और कम्स आफ्टर द फर्स्ट वन, तो जो चीज़ फर्स्ट के बाद आती है या फिर आपका that is coming in the last, so that is considered later. So that shows the position. Okay, now mountain is former and later is squirrel. So that former means the mountain is telling to the squirrel little prig. So prig means that anybody who has a attitude, so who have attitude, so they think that I am the best, ना. सो दिस इज़ द थिंग विच माउंटेन इज टेलिंग, बिकॉज इट, ठीक है, जो स्क्वायरल है वो साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल है आपका, दैट्स वाई लिटिल पिग इज सेड बाय द माउंटेन. देन बन रिप्लाइड. सो बन इज द नेम ऑफ द स्क्वायरल. सो बन रिप्लाइड मीन्स बन आंसर्स, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. सो बन मीन्स स्क्वायरल इज टेलिंग टू द माउंटेन, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है आपका, दैट यू आर वेरी बिग इन साइज, but all sorts of things and weather must be taken in together. Okay, but that if we talk about all things, है ना, and the different weathers or the seasons, so we have to take them together. It is not possible that we can take only few things. तो कुछ चीज़ों को लेके हम नहीं चल सकते आपका. So to make up a year and a sphere, so whatever is on the earth, so everything is इन अ मूवमेंट, हर एक चीज़ आपके एक मूवमेंट में है आपका. एंड दैट एवरीथिंग, ठीक है, मेक्स अ ईयर. सो इन होल ईयर यू कैन सी दैट दे आर सो मैनी चेंजेस विच वी सी इन द थिंग्स ऑल्सो, इन द वेदर ऑल्सो, है ना, दैट जस्ट बैलेंस द अर्थ. तो कहीं ना कहीं बैलेंस जो है अर्थ का, वो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल थिंग्स. Okay, I think it no disgrace to occupy my place. So that what is the thinking of the squirrel? So squirrel is thinking that
it is a disgrace to occupy my place. So disgrace means that is very shame that you cannot take my place, है ना. whether you are big in size, it doesn't matter. ठीक है, तो कितने ही बड़े हो आप साइज में आपका, but you cannot take my place. Okay, even that I am small in size. If I am not as large as you, you are not so small as I. Now that there is a comparison. ठीक है, so they are talking about large and small. So firstly that squirrel tells, तो squirrel ये सारी चीज़ें कह रही है आपका माउंटेन से आपका, that I am not as big. ठीक है, तो I cannot be as you, जितने बड़े तुम हो आपका, I am not as large or as big you, but you are not as small as I. but जितना छोटी मैं हूँ आपका, इतने छोटे तुम नहीं हो सकते हो आपका. so everybody has its quality, so everything has its quality. So and not half so pry, so means that you cannot, pry means active or lively, because that you are non-living and I am livable, so I can move anywhere. So you cannot walk or you cannot be active even half of me. तो तुम जितना मैं मूव करती हूँ उतना तुम, है ना, उसका आधा भी आप मूव नहीं कर सकते हो आपका. सो दिस इज अ थिंग विच स्क्वेरल इज टेलिंग टू द माउंटेन. I will not deny you will make a very pretty squirrel track. So deny means that I am not refusing, I am not saying के that है ना, you can make a very pretty squirrel track. So you know okay that squirrel moves over the, है ना, सरफेस. सो इट मूव्स ऑन द सरफेस, तो वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आपकी मूव करती है आपका. सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय यू, तो वो तुम्ही ने ही बनाया आपका, है ना, जो वे है जिसको मैं फॉलो करती हूँ आपका. So it means that talents differs, all is well and wisely put. So that everybody has his own talent. हर किसी के अंदर, है ना, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ गॉड ने दी हैं आपका. सो यू कैन नॉट कंसिडर एनी बडी इन्फीरियर और सुपीरियर, तो आप किसी को कम या ज़्यादा नहीं मान सकते आपका. सो है ना, एवरीबडी हैज़ इट्स वैल्यू. सो all is well and wisely put. So all things are given by the God in a very proper manner. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. So it means now you can see that, है ना, जो दो, it is an argument which is given by the squirrel के that, है ना, that I agree with you के that you can handle or you, ठीक है, have a burden, ठीक है, of forest because it grows on you. आप देखेंगे कि माउंटेन्स रीजन्स के अंदर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है आपका. सो देर इज सो मच ग्रीनरी और नेचुरल वेजिटेशन विच यू कैन सी, है ना. सो दैट यू आर हैंडलिंग, ठीक है, सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, इट इज़ अ ह्यूज बर्डन विच आई कैन नॉट, ठीक है, हैंडल. तो मैं नहीं उसको कवर, है ना, बर्डन को झेल सकती है आपका. बट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, ए वेरी स्मॉल नट इट कैन नॉट बी क्रैक बाई यू. ठीक है, डिस्पाइट यू आर बिग इन साइज, भले ही तुम साइज में कितने ही बड़े हो आपका, बट यू कैन नॉट क्रैक अ नट. इट मीन दैट यू आर बिग इन साइज बट यू कैन नॉट क्रैक इवन ए स्मॉल नट. ठीक है. सो what poet wants to tell, so poet wants to tell this thing के that we have to give importance to everybody. so everything, ठीक है, has its specific quality. तो हर किसी की आपका क्या अपनी क्वालिटीज़ होती हैं आपका. so we have to keep this thing in mind and we have to give respect to that person or whatever the object that person has. Okay, so I hope that you have understood this video. So thank you so much. So if you have liked this video, please like, share and subscribe my channel. So bye everyone.